Welcome back guys. अब हम करेंगे साउंड क्वेश्चन 10 पेपर 2 5054. Let's start. Question 10. Both sound and ultrasound are waves that travel in solid, liquid and gas. ठीक है ना? तो state how sound differs from ultrasound. Ultrasound की range जो होती है that is between 2 to 18 megahertz. Megahertz. ठीक है ना? While on the other hand, sound की जो frequency range होती है that is between 20 to 20,000 hertz. So ultrasound is inaudible for us. Let's see. Frequency of sound waves smaller or its frequency is less than 20,000. That is the answer. आगे चलते हैं. Sound and ultrasound are longitudinal waves that consist of compressions and rarefactions. मैंने आपको काफी दफा बताया कि compressions कौन सी होती हैं. Compressions are the one the denser area. The denser region is the compression, while on the other hand, the sparse region, जिन regions में कम वो होते हैं, what do you call particles, that is rarefactions. State what is meant by a wave and describe how a longitudinal wave differs from a transverse wave. First, I'll tell you how a longitudinal wave differs from a transverse wave. A longitudinal wave में जो होता है the vibration of particles are parallel to the direction of energy, while on the other hand, transverse wave में the vibration of particles are what do you call it, perpendicular to the direction of energy. I'll repeat it once again. In longitudinal waves, the direction of energy is parallel to the vibration of particles, while on transverse waves, vibration of particles is perpendicular to the direction of energy. And as for the wave is the transmission of energy through a medium. Medium कोई भी हो सकता है, solid, liquid and gas, or depending on what the medium is, the values change. Not the values, like the properties change. So that is the answer for the question. Transmission of energy through a medium with no net movement medium, or by vibrating particles, vibration parallel and anti-parallel to wave, energy travel direction or cannot be polarized. अच्छा, figure 9.1 represents a longitudinal wave of frequency 25,000 hertz. ठीक है ना, a longitudinal wave of frequency 25,000 hertz. So they have told us on figure 9.1, mark 2 points at the center of two different rarefactions and label what do you call it, each one R. अच्छा, rarefactions कहाँ होती हैं? Rarefactions are at the less dense area. अच्छा जी, इसको हटा देते हैं. R यहाँ लिखा, ये R हो गया. मैं तीनों की तीनों, अगर आप तीनों के तीनों वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आई एम मार्किंग them all. अच्छा, while we're at it, let's mark the compressions as well. Compressions क्या होते हैं? Areas of high density. तो yes, done. आगे चलते हैं. On figure 9.1, draw a double-headed arrow to indicate a distance that is equal to one wavelength of the wave. अच्छा, one wavelength of the wave को अगर हमने represent करना है, that would be equal to one rarefaction, one compression and one rarefaction. Again, या आप ऐसे भी कर सकते हैं. आपके मैंने पहले एक दफा करवाया हुआ है, आई थिंक इन P1. तो वन कंप्रेशन, वन रेरफैक्शन, वन कंप्रेशन. जैसे मैंने आपको बताया हुआ है ना कि वेव्स जो होती हैं, आपने टू सिमिलर पॉइंट्स उन्हें लेने होते हैं ऑन टू एडजेसेंट वेव्स. आपने सिमिलर पॉइंट्स लेने हैं टू ऑन टू एडजेसेंट वेव्स. ठीक है ना? तो दैट इज द सेम फॉर्मूला अप्लाइड हियर. तो अगर हम इसको यहाँ करते हैं, व्हाट यू कॉल इट, one rarefaction, one compression, one rarefaction will be equal to a wave, a wavelength. Measure the length of the arrow on figure 9.1 and use it to determine the speed of the wave in oil. अच्छा,
In order to find the speed of the wave, we'll need to use the formula v is equals to f lambda. अच्छा हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी 25,000, v इज इक्वल एफ लैम्डा। वेवलेंथ क्या होगी हमारे पास? वेवलेंथ हमें ये इधर से इधर तक के डिस्टेंस से आ जाएगा। इधर से इधर तक का डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ एरो will be in centimeters, so make sure to convert that into meters. And when you convert that into meters, apply it into the formula v is equals to f lambda. Frequency is 25,000. 25,000 multiplied by this length will be equal to the velocity. I cannot physically make the, what do you call it, scale. The scale को मैं use नहीं कर सकता, I don't have it. तो आपको मेरी बातों से गुजारा चलाना पड़ेगा. So this is the formula, I mean this is the working. आगे चलते हैं. See, a sound wave traveling in a liquid passes into air. State what happens to the speed of the sound wave as it enters the air. अच्छा आपको तो पता ही होगा कि the speed of sound is the greatest in solid. After that, it is the greatest in liquid, and after that, it is the greatest in air. I mean gas. पहले सबसे ज्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में. तो जब गैस से एयर से लिक्विड लिक्विड से एयर में जाएगा, द स्पीड विल डिक्रीज. आपको भी मैंने बताया कि सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, उससे कम लिक्विड में होती है, और उससे कम गैस में होती है. ठीक है ना? गैस में सबसे कम होती है, उससे ज्यादा लिक्विड में होती है, उससे ज्यादा सॉलिड में होती है. तो जब लिक्विड से वेव गैस में जाएगी, तो द स्पीड इज बाउंड टू डिक्रीज. ठीक है ना? स्पीड इज बाउंड टू डिक्रीज. आगे, द वेव इन द लिक्विड ट्रेवल्स टूवर्ड्स द surface at an angle. Figure 9.1 shows the center of the compression of the sound wave in the liquid. Some compressions shown have reached the liquid air boundary. The parts of these compressions in the air are not shown in figure 9.2. On figure 9.2, draw the part of these compressions that are in the air. अच्छा ये मैंने यहाँ रख दिया है. And let's solve this. तो बेसिकली हमने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमने बनाना है नॉर्मल. और नॉर्मल बना देते हैं हम. नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री. ठीक है ना? आपने ये याद रखना है. तो हमने नॉर्मल बना दिया. अब नॉर्मल से वेव क्या करेगी? What will it do? Will it go away from the normal, or will it come closer to the normal? बताएं. Since the speed is decreasing, it will come closer to the normal. ठीक है ना? It will come closer to the normal. और अगर हम इस हिसाब से वो बनाएं, what do you call it? अगर हम इस हिसाब से वो what do you call it, waves बनाएं, the wave fronts, तो it will look something like this. चलिए मैं बना रहा हूँ. You can copy me. ठीक है ना? It will be perpendicular to the direction of the wave. Direction of wave के perpendicular होगा wave fronts. ठीक है ना? Like we can see. So आगे देख लेते हैं. Describe in outline how, what do you call it, ultrasound is used in cleaning. Ultrasound is used in cleaning. It is put into a लिक्विड में डालते हैं ना. आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड की, व्हाट डू यू कॉल इट, डायग्राम्स. इट इज पुट इन अ लिक्विड. लिक्विड में डाला जाता है द ज्वेलरी विच इज बीइंग क्लीन्ड. और फिर अल्ट्रासाउंड वेव्स आती है, और देन दैट वेव्स causes the piece of jewelry to vibrate vigorously. And when the piece of jewelry is being vibrated, all the dirt or the imperfections कह रहा हूँ, all the dirt, गंदगी सारी, it vibrates off of the jewelry. मतलब shaken off हो जाती है from the jewelry. Solvent
Vibrated by ultrasound, dirt particles shaken off, dislodged, removes dirt. अब ये ले लेते हैं ऐसे. So that is gonna be it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.